Hello and welcome to Swaraaj IS Academy. ओडिशा सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन को टार्गेट करके ना आम जो मॉक टेस्ट बनईचे चलतु किसी नुआ क्वेश्चन डिस्कस करबा जोटा कि इंडियन इकोनॉमी खास करके ओडिशा इकोनॉमी पर किसी क्वेश्चन डिजाइन करछि ताको डिस्कस करबा एठी जार प्रथम प्रश्न एट हैला कि व्हाट इज द गोल ऑफ द रिवाइवल एंड सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरगॉटन फूड एंड नेग्लेक्टेड क्रॉप्स स्कीम लॉन्च्ड इन ओडिशा इन 2025 ये स्कीम की हमर लॉन्च हेची यार गोल कोन व्हाट इज द गोल बोली पचार हेची व्हाट इज द गोल तो फर्स्ट ऑप्शन के हला टू प्रमोट हाइब्रिड पैडी कल्टीवेशन ऑप्शन बी हला टू रिवाइव ट्रेडिशनल क्रॉप्स एंड इंडिजिनस फूड कल्चर ऑप्शन सी हला टू इंक्रीज द केमिकल फर्टिलाइजर यूज और ऑप्शन डी हला टू रिड्यूस द इरिगेशन कवरेज देखो रिवाइवल एंड सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरगॉटन फूड एंड नेग्लेक्टेड क्रॉप स्कीम तो ये दीटा जो हमरो कीवर्ड अछि फॉरगॉटन फूड एंड नेग्लेक्टेड क्रॉप एटू टिके भी जो दिमाग लगेबा ताहले हम एटा वाइजली सॉल्व करबा या आंसर ता कोन हे परिबो आंसर ता हो तमरो ऑप्शन बी टू रिवाइव द ट्रेडिशनल क्रॉप्स एंड इंडिजिनस फूड कल्चर इज द राइट आंसर हमर एठी देखो ओडिसा हमर जून मास ओके जून मास 2025 तारिख रे ए स्कीम ता लॉन्च करथिला हमरो जोटे की हमरो नेक्स्ट 5 वर्ष 2025 रु नेकिना 30 पर्यंत 5 इयर्स भितरे हमरो जो क्रॉप गुडा को लोप पाई जाउची जो क्रॉप गुडा को धीरे धीरे ऑब्सोलीट होआ पे लागुची से क्रॉप को पुनी इंटेंसिफाई करा हबो ताको रिवाइव करा हबो ताको टारगेट करा है जोटा कि हाईली न्यूट्रिशियस एंड सस्टेनेबल क्रॉप सब जो द्वारा कि हमर पाखापि 60,000 फार्मर 60,000 फार्मर्स एठी उपकृत हेबे देखो एटा होची करंट अफेयर न्यूज़ पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन एगुडा बना हेची जेहेतु ओडिशा सिविल सर्विस ओपीएससी निजको आउरी रिफॉर्म करूची इवोल्यूशन करूची ए भलिया क्वेश्चन तुमे एक्सपेक्ट करि परिबो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ऊपर क्वेश्चन बनि परिबे स्कीम्स ऊपर क्वेश्चन बनि परिबे करंट अफेयर ऊपर क्वेश्चन बनि परिबे और इकोनॉमिक्स ऊपर एंती क्वेश्चन टारगेट करि परंती और से इवोल्यूशन को लास्ट बहुत वर्ष एक्सपीरियंस मोर नेगिना ए सब क्वेश्चन डिजाइन करके नेगी आछी एठी कोन होची हमर पाखापाखि 25 टा ब्लॉक ओके 25 blocks across 15 district रो 60,000 फार्मर एटू उपकृत हेबे चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फोकस सेक्टर वाज एम्फसाइज्ड फॉर एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट इन ओडिशा इन 2025 अगेन एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट हमर गोटे होची जो 2025 रे हमर कौन से को सेक्टर को से टारगेट करछि ऑप्शन ए हला ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन बी हला फूड प्रोसेसिंग ऑप्शन सी हला हेवी मशीनरी और ऑप्शन डी हला तमरो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वो सेक्टर को टारगेट करी करा हेची यार आंसर हला फूड प्रोसेसिंग जेटा कि हमर एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट होची कोठी फूड प्रोसेसिंग पाई कि ना ये हमरो सेंट्रल गवर्नमेंट रो प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ ओके प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस ओके किबा को शॉर्ट रे पाउची पीएमएफएमई फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस सहित एटा टाई अप है कि ना ओडिशा फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2022 ओडिशा फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2022 अंतर्गत एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट हपाइन जाउछि हमरो ओडिसा रे ये टारगेट कराइ छि फूड प्रोसेसिंग को एक क्वेश्चन टा मॉडिफाई करके अलग टाइप रे भी आसी पारे बट ओडिसा रे जहां भी इनिशिएटिव और स्कीम्स अछि ताको हमें इन दिवा कवर करबा नेक्स्ट क्वेश्चन हला व्हिच न्यू एमएसएमई फोकस्ड इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा इन जून 2025 टू प्रमोट नेटवर्किंग को प्रमोट करा हिची गोटे एमएसएमई फोकस्ड इवेंट हितिला तार ना कोन प्रथम है ओडिशा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव सेकंड ऑप्शन कोची प्रोपैक ओडिशा एग्जीबिशन ऑप्शन सी कोची स्टार्टअप ओडिशा समिट ऑप्शन डी कोची विकसित भारत एमएसएमई फेयर ये भलिया क्वेश्चन गुडा को तुम निश्चय पढिथिबो कि नाही किंतु हमर नॉलेज पई बहुत ही जरूरी तार आंसर होची हमरो ए ओडिशा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव 2025 एटा आस्तिला जेटा कि एमएसएमई नेटवर्किंग एंड पॉलिसी ड्रिवन ग्रोथ MSME
networking and policy driven growth. या ऊपर फोकस कराई जार ना हला ओडिशा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें व्हिच न्यू इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव वाज साइंड विथ सिंगापुर इन जनवरी 2025 टू बूस्ट ओडिशास आईटी सेक्टर. ओडिशा आईटी सेक्टर को बूस्ट करिया पई सिंगापुर सहित हमरो एमओयू साइन हेची. यार को ऑप्शन जो राइट आंसर हबो. ऑप्शन ए कोची इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर. ऑप्शन बी कोची ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर फॉर फिनटेक. ऑप्शन सी कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब. ऑप्शन डी कोची टेक्सटाइल इनोवेशन पार्क. व्हिच इज द राइट आंसर. तमरे एठी आंसर कोटा हबो. देखो सिंगापुर सहित हमर टाई अप अछि ओडिसा रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट. ओके ओडिसा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट कहा तो सिग्नेचर करछि. एमएसएमयू का साइन है एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन है सिंगापुर बेस्ड कंपनी. सिंगापुर सहित ओडिसा रे कोन डेवलप करिया पई कि ऑप्शन हमरो बी ग्लोबल कॉम्पिटेंसी फॉर सेंटर फॉर फिनटेक. फिनटेक सेंटर गोटे हमरो ओडिसा रे एस्टैब्लिश आ पई जाउची जोटा कि हमरो अगेन भुवनेश्वर रे होउची. ओके ऑप्शन हबो आंसर कोन बी. जा फोकस होची फिनटेक एंड इंश्योर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. ओके यार गोल होची फिनटेक एंड इंश्योर टेक इनोवेशन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा which sector received the largest investment in Odisha's approved mega project in June 2025. again June 2025 रे again ओडिसा रे गोटे बहुत बड़ इन्वेस्टमेंट हमरो हेची और साइन हेची ओ सेक्टर. अगेन स्टील ऑप्शन बी ग्रीन हाइड्रोजन रे. ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी टेक्सटाइल. सबुट बड़ हम इन्वेस्टमेंट आछि के कहबा आंसर एल्युमिनियम रे. सही कंपनी आगुर भी ओडिसा रे इन्वेस्ट करके बहुत प्रॉफिटेबल हेची वेदांत. ओके वेदांत इज गोइंग टू इन्वेस्ट 1.28 lakh crore rupees with a target of 3 metric ton per 3 million ton per annum रो टारगेट रखाइची गोटे एल्युमिनियम स्पेल्टर and 4900 megawatt captive power plant. जोटे कि हमर एस्टैब्लिश कोठी होची के कहि परबे एटा कोठी होबा पई जाउची पुनी इन्वेस्टमेंट तमरो ढेंकानाल रे. ओके जोटा कि तालचेर अनुगुल तापर बु जदि आसीबो ढेंकानाल रे हमर ए इन्वेस्टमेंट हा पई जाउची. एल्युमिनियम रे वेदांत इन्वेस्टमेंट करूची. एटा भी हमर कैबिनेट निष्पत्ति नै थिला एटा फाइनल थिला. एमिति किछि क्वेश्चन जदि आहुरी क्वेश्चन तमे डिस्कस करिया पई चाहूछ ताले एप्लीकेशन हमरो स्वराज शिक्षा तमे प्ले स्टोर डाउनलोड करि परिबो. ओके यू कैन डाउनलोड इन प्ले स्टोर जोट कि तमे ए एप्लीकेशन में इंस्टॉल करके तो यू कैन अवेल द टेस्ट सीरीज. जो टेस्ट सीरीज ई बहुत एक्सपीरियंस सहित मु मनैछि निजे बहुत सारा इंटरव्यू आ मो गाइडेंस रे बहुत सारा सिलेक्शंस भी हेचंती. ए भलिया क्वेश्चंस तमे पाई परिबो जेटा कि OCS 2024 पई बहुत ही एलिजिबल. ओके या सहित आज वीडियो टाइट रखिबा. नेक्स्ट सेशन रे आउ किछि नया क्वेश्चन नै के आसीबी YouTube रे पई. ओके तो सब को लाइक शेयर कम करिया छै करो. लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि तमे रेगुलर OPSC पई फीडबैक चाहछो क्वेश्चन चाहछो नॉलेज चाहछो गाइडेंस चाहछो देन like share and subscribe. Okay so thank you.